So hello everyone and a very good afternoon to all of you. So today we have a new problem which name is sequential digits, Leetcode 1291 problem. So let's read the problem. So an integer has a sequentially digits if and only if each digit in the number is one more than the previous digit. Okay. Return the sorted list of the all integers in the range of low to high. So inclusive that the sequential digits. Okay. So let's take an example for this. If low equals to 100 and high equals to 300, so the difference should be 1. Means if we take the difference like 1, 2 minus 1 will be 1, 3 minus 2will be 1, and same as 3 minus 2 will be 1, and 4 minus 3 is 1. So it will be like 1, 2, 3, then 2, 3, 4. If we take 3, 4, 5, that is greater than the high value. So we will not take that 3, 4, 5. So our digits will be 1, 2, 3, and 3, 4, 5. As same as if low is starting from 1000 and high is starting from means low is 1000 and high is 13,000. So डिजिट्स कैसी होंगी 1 2 3 4 बिकॉज लो में कितनी डिजिट्स है 4 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है लो और हाई 5 डिजिट पे खत्म हो रहा है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे 4 डिजिट से लेके 1 2 3 4 देन 2 3 4 5 then 3 4 5 6 then 4 5 7 8 4 5 6 7 like this will go if now if the number is 6 7 8 9, so the next number will be 7 8 9 10. So 10 is the means we are going from 5 digits, so the next number will be 1 2 3 4 5. So it will be like this. So now let's talk about the approach for this problem. So if low equals to 100 and high equals to 300, so what will be approach for this solution is we will create a string, मतलब एक string create करेंगे और जिसमें करेक्ट नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे 1 से लेके 9 तक नंबर होंगे और उसके अकॉर्डिंग लेते जाएंगे. इफ माई लो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, लो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100, मान लो 100 से स्टार्ट हो रहा है मेरा लो. सो नंबर कैसे होंगे 1 2 3 बिकॉज 3 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 फिर 1 2 3 4 ऐसे जाता जाएगा. वो डिपेंड करेगा हाई पर. सो अवर कोड विल बी लाइक दिस कि हम लेंथ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे. लेंथ 2 से क्यों करेंगे क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि हमारा लो है ना जो लेस देन मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, मतलब 2 डिजिट से तो स्टार्ट होगा ही. सो लेंथ विल गो फ्रॉम 2 टू एस डॉट साइज, जितनी स्ट्रिंग की साइज है, स्ट्रिंग की साइज कितनी है 9. सो 2 टू एस डॉट साइज तक जाएगा और लेंथ प्लस प्लस करते जाएंगे इस लूप में. देन सेकंड लूप स्टार्ट करेंगे जो कि इंडेक्स को बताएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स को बताएगा. दैट विल गो फ्रॉम 0 टू s dot size minus length. I will discuss about this why s dot size minus length and इस स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस प्लस भी से इंक्रीज करते जाएंगे उसको. फिर हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग लेंगे जो कि एक सब स्ट्रिंग होगी. कहाँ से कहाँ तक होंगी स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके लेंथ तक. ठीक है, मैं एग्जांपल लूंगा उसमें बताऊंगा. Now convert we will convert it to integer form and we will push it in it the number that we will get from converting the string to integer. So जो नंबर आएगा उसको अब इस आंसर वेक्टर में डालेंगे और एक कंडीशन चेक करेंगे द नंबर शुड बी इन रेंज ऑफ लो टू हाई. So that will be my code. So now let's take an example for this. If my string is like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ले रखी है जो कि s है अपनी. If my length is 5, okay, my length is 5 and we know that s dot size कितना है 9 है. So s dot size minus length क्या हो जाएगा 9 minus 5 4 हो जाएगा. So हमारा 0 1 2 3 4 जो स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 से लेके 4 तक, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ इक्वल टू 5 है. लेंथ इक्वल टू 5 है. वी हैव सीन दैट इफ लो इज गोइंग फ्रॉम लो इज 100, सो हम लेंथ कहाँ से लेते थे 1 2 3 लेते थे. अब लो मान लो 10,000 है, 10,000 है 5 डिजिट या. सो लो 10,000 है तो हम 1 2 3 4 5 लेंगे, फिर 1 2 3 4 2 3 4 5 6 ऐसे लेंगे. सो इट विल बी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 तक जाएगा. सो इसलिए हम एज डॉट फाइव माइनस लेंथ कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस. तो हमें पता है कि एटमैक्स लेंथ कितनी हो सकती है, इसकी तो लेंथ 9 है पर एटमैक्स कितनी हो सकती है बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू एस डॉट साइज. सो एटमैक्स तो 8 ही होगी. और हमें पता है कि बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज वी आर यूजिंग टू लूप्स. सो here the n equals to and the value of n is 8 because we are starting from 2, we are not starting from 1.
So we are starting from 2, so n will be 8. So big of n square means big of 8 square. 8 square will be 64. So big of 64 will be the time complexity, which is a constant time complexity. So the time complexity for this is big O of 1. And as you can see that we are not using any exercises for this. So space complexity will be big O of 1. So now let's do the code for this. So firstly, I will do is I will create a string which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This will contain 1 to 9 number. Now what I will do, I'll check like you can see, we will use two loops for int. Where first loop will go from a length, means a length equals to 2 to length is less than equals to s dot size, then length plus plus. Now second loop will go from starting index. Second loop will show starting index, and starting index I am denoting as starting index si is going from 0 to starting is less than s dot size minus length and starting index plus plus. Now what I will do is I'll take an element, means a string. I'll create a string temp equals to s dot substring of from starting index to length. So ये एक सब स्ट्रिंग ले लेगा, लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0 एंड लेंथ इज लाइक माय लेंथ इज I have taken the example previously. The length is 9 and starting index is 0, so length is 5, sorry. If my length is 5 and the starting index is 0, so at max it can take 0 to 5 index, 0 to 4 index. So 0, 1, 2, 3, 4, it's a 5 characters, 5 numbers will be there. So it is like that. Now what I will do is I'll convert this string to integer so that I can push that number in answer vector. So for this we have to create an answer vector int answer. Now what I will do is I have to push this number in an answer vector. So answer dot push back of this number means stoi string to integer of temp. This we have done. Yeah, this we have done. Now for this I have to use a condition like if by number is like so before pushing the number into this we have to check if that number is in this range, low to high range. So what I will do is I will create a number int number equals to stoi string to integer of that temporary string. So this will give me a number like this will give me a number 1, 2, 3. So I'll check now before pushing into this if a number is greater than equals to low and number is less than equals to high. If this condition holds, then I will push that number into the vector. So answer dot push back of that number, and now finally we will return our answer. Now let's run this and see if this will work or not. It should be a length. Here again also length. It is giving something wrong. It should be less than equals to here. Yeah, yeah, it is working perfect. Let's submit this. Beats 100% of C++ users because as we have discussed that here the time complexity is big O of 64, which is a constant time complexity big O of 1 like.
And here space complexity is also big of one, so we are not taking any external space, and not we are not taking any extra time for this. So if this will be, if the constant is like low and high, and this will be in 10 to the power 18, then we will use long for this. So here was the complete solution. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe.